Hello everyone, you are welcome to class. Today we are going to talk about A Farewell to Arms by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway का जो A Farewell to Arms वर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे और बैकग्राउंड के बाद में कैरेक्टर्स and summary, and at the end of the video we will do some MCQs related to this chapter. अगर आप लोग यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है. तो वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या नेक्स्ट कौन सी समरी आप लोग देखना चाहते हैं उसके बारे में जरूर लिखिए. सो अर्नेस्ट हेमिंगवे, लेट्स गो थ्रू द राइटर्स बैकग्राउंड फर्स्ट. ही इज एन अमेरिकन ऑथर. सबसे पहली चीज क्या है, वो अमेरिकन ऑथर है. ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी and he was born in 1899 in Oak Park, Illinois, and spent much of childhood in Michigan. This point is very important about his life and about this work. He served in World War First as an ambulance driver for Red Cross in Italy, and this experience heavily influenced his writing, particularly this work. If we go through his many novels and short stories, some of his important works are The Sun Also Rises, A Farewell to Arms, The Old Man and the Sea, which won Pulitzer Prize in 1953 and Nobel Prize in Literature in 1954. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनको हम वन बाय वन यूजीसी नेट की क्लास में आप लोगों के लिए ये वाला हम ऑलरेडी द ओल्ड मैन एंड द सी इसे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं. चलिए आगे देखते हैं. Hemingway was known for his love for adventure and often wrote about his experiences traveling and hunting in Africa, Europe, and Caribbean. Next important fact about Hemingway's life is he belonged to Lost Generation. Lost Generation जो poet का group था उससे ये belong करते हैं, of writers and artists who came of age during World War First and felt disillusioned with traditional values. बहुत important एक point है. And at the end he committed suicide in 1961. He struggled with depression throughout his life. As I told you that we will discuss the background of the work. So Farewell to Arms. It is a novel by Ernest Hemingway, as we know, and it got published in 1929. This is a semi-autobiographical novel. So we know that he has, served as an ambulance driver, and he shared his story through this story. Now, let's not go through all these details. If you wish to join these PDF courses, you can directly WhatsApp me. And the title of the novel comes from a poem by 16th century English poet George Peele. George Peele की जो poem है उससे इस novel का title लिया गया है. And A Farewell to Arms remains a widely read and studied novel today. Is considered a classical to American literature. तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पर. हम अबाउट द फेयरवेल टू आर्म्स के बारे में हम सारा देख चुके हैं. अब हम डायरेक्टली इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल. फर्स्ट इज द प्रोटैगनिस्ट फ्रेडरिक हेनरी. फ्रेडरिक हेनरी कौन है? ये प्रोटैगनिस्ट है इस वर्क का. फ्रेडरिक इज एन अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर सर्विंग इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, आप लोगों के एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है. और इसलिए ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है क्योंकि जो फ्रेडरिक हेनरी है प्रोटैगनिस्ट है, वो खुद क्या है इस वर्क में एमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर है और ये इटली में क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे. He is portrayed as a flawed and sometimes unreliable narrator, and the novel follows his experience during the war, including his love affair with Catherine Barclay. जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है आप लोगों के कैथरीन बार्कले, ब्रिटिश नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. कैथरीन इज लव इंटरेस्ट ऑफ फ्रेडरिक हेनरी और इनका जो है लव अफेयर है. शी इज पोर्ट्रेड एज यंग एंड इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो वल्नरेबल एंड हाउंटेड बाय द लॉस ऑफ हर फियांसे इन अ वॉर. उसका जो फियांसे है वो वॉर में क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. रिनाल्डी.
अ क्लोज फ्रेंड ऑफ फ्रेडरिक्स एंड सर्जन इन इटालियन आर्मी। जो इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, सर्जन है इटालियन आर्मी में, और ये फ्रेडरिक जो प्रोटैगनिस्ट है उसका क्या है, फ्रेंड भी है। Rinaldi is portrayed as a charming and charismatic womanizer, but also a loyal friend to Frederick। ये क्या है आप लोगों का, एक लॉयल फ्रेंड है किसका, प्रोटैगनिस्ट का। द प्रीस्ट ये एक माइनर कैरेक्टर है। काउंट ग्रैफी, काउंट ग्रैफी भी क्या है आप लोगों का, एक माइनर कैरेक्टर है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रीस्ट इज अ chaplain in the Italian army who becomes a confidant to Frederick, एंड जो काउंट ग्रैफी है ये भी क्या है, एक एरिस्टोक्रेट हु बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ फ्रेडरिक। तो दोनों के दोनों क्या है, फ्रेडरिक जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसके फ्रेंड है। हेलेन फर्ग्यूसन, Helen Ferguson, a nurse who works with Catherine Barclay. Helen is portrayed as a cynical and bitter character who is disillusioned by the war. Atta Moretti, an Italian soldier and friend of Frederick. Moretti is killed in battle. Moretti जो है वो उसकी डेथ हो जाती है स्टोरी में। Emilio, a bartender who works at the hotel where Frederick stays in Milan। जब मिलान में वो चले जाते हैं, भागकर, वो आर्मी से भागकर कहाँ चला जाता है, मिलान में चला जाता है। तो वहां पर उसका एक फ्रेंड होता है मिलियो। अभी हम स्टोरी में पूरा देखेंगे। And Emilio gives a lot of support and a lot of advice to piece of advice to Frederick। जो protagonist है उसकी help करता है। Bonello, another ambulance driver who serves with Frederick in Italy। ये भी क्या है, बोनेलो भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जिसने साथ में इटली में काम किया था। बोनेलो के अगर कैरेक्टर की बात करें, ही इज अ ह्यूमरस एंड केयर फ्री कैरेक्टर। Ferguson, Helen's fiance who is killed in war. His death has profound impact on Helen and Catherine। ये हेलेन का क्या है, फियांसे है जिसकी की वॉर में डेथ हो गई। मिस वैन कैम्पन, Miss Van Campen, a strict and unsympathetic head nurse who works with Catherine and Helen in hospital। Head nurse है। And the last one is Gino, an Italian waiter who works at restaurant where Frederick and Catherine may first meet। अब समरी की बात कर लेते हैं। We will go through the complete summary। It is World War First in 1916, and the Italian army is trying to hold off the United forces of ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो इटालियन जो है वो क्या कर रही है, आर्मी कन्फ्रंट कर रही है टू कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी की, एंड द वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन। द नरेटर लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी इज एन अमेरिकन हु हैड जस्ट जॉइंड द इटालियन एम्बुलेंस कॉर्प्स एज अ volunteer। So as you can see, narrator who is the narrator? Narrator is Frederick Henry। Frederick Henry अपने आप में ही narrator है, वही स्टोरी बताता है, और उसने इटालियन एम्बुलेंस को क्या किया है, एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया है। एज द नोवेल ओपन्स, हेनरी इज अबाउट टू टेक हिज विंटर लीव। और जैसे कि नोवेल की स्टोरी शुरू होती है, उसमें हेनरी लीव के लिए क्या करता है, कोशिश करता है लीव लेने के लिए। ही स्पेंड्स द इवनिंग विद हिज फेलो ऑफिसर्स हु मॉक द रेजिमेंट्स प्रीस्ट फॉर हिज सेलिबेसी। उनके बीच में बात चलती है, और जो प्रीस्ट की सेलिबेसी है उस पर वो मॉक करते हैं, मजाक करते हैं साथ में बैठ के। देन द ऑफिसर्स गो टू द ऑफिसर्स ब्रॉदल फॉर नाइट। वो ऑफिसर्स ब्रॉदल में जाते हैं सारे ऑफिसर्स। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में एक स्टोरी बना के चल सकते हैं और पिक्चराइजेशन कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक सामने बैठे हुए हैं और स्टोरी अभी आगे को चल रही है। When Henry returns from leave, his roommate Rinaldi introduces him to two English nurses, Catherine Barclay and Helen Ferguson। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हेनरी वापस आता है तो उससे दो नर्स से रिनाल्डी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। पहले थी कैथरीन बॉकले एंड हेलन फर्ग्यूसन। एंड ऑल्दो रिनाल्डी हैज बीन इंटरेस्टेड इन कैथरीन, the immediate chemistry between her and Henry is obvious। On the first meeting, she tells him the sad story of her fiance who was killed in the war, who riding crop is still carries। So यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि वो बताती है उसे, जब वो वापस आता है हेनरी, तो उसे बताती है कि उसके फियांसे की डेथ हो चुकी है। As their flirting deepens in following days, Henry is able to coax kisses from her, and he gets some kisses from her, and she asks him to stay, to say he loves her before acknowledging that this is only a game। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनके बीच में फ्लर्ट चलता है,
and then story goes on. Soon Henry goes to the first major battle in which he has taken part. Henry उसके बाद में जो फर्स्ट उसका मेजर बैटल है उसमें चला जाता है. He is innocently eating macaroni and cheese with other ambulance driver when a mortar shell crashes through his bunker, killing a driver and injuring Henry's leg. अब जिसमें हेनरी जहां बंकर में बैठा हुआ है उस बंकर में एक मोटार का शेल गिरता है और उसका जो बंकर है वो टूट जाता है और जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो जाती है और हेनरी के लेग पे ही गेट्स इंजर्ड. हेनरी इज टेकन टू हॉस्पिटल इन मिलान फॉर ट्रीटमेंट. अब वो कहाँ उसको लाया जाता है? मिलान लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए. When he arrives, he discovers the hospital is badly managed and the doctors are incompetent. जो डॉक्टर्स हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं वहाँ पे. हॉस्पिटल बैडली मैनेज्ड है. Fortunately, one doctor, Valentini, is able to remove the sharpener from Henry's leg. यहाँ पे एक डॉक्टर उसे मिलता है जो कि उसको क्योर करता है. While Henry is recuperating, when he is overcoming his, uh, the injured leg, उसकी जो injured leg है उसको overcome कर रहा है, ठीक कर रहा है, recuperating, and Catherine Barclay is transferred to the hospital, and when Henry sees her again, he realizes he loves her. तो जब वो ठीक हो रहा होता है, रेक्यूपरेट हो रहा होता है, तो उसी टाइम पे हेनरी बार्कले को वहां पे ट्रांसफर कर लिया जाता है and he realizes he comes to know that he loves her. She begins to sneak into his room at night and they conduct a love affair all summer. And then she kept on, sneaking into his room and then they had love affair for whole summer. But Henry eventually has to return to front. अब हेनरी को क्या करना है? फिर से फ्रंट पे जाना है, लड़ाई पर जाना है. Before he leaves, Catherine tells him she is pregnant with his child. Now Catherine informs him about being pregnant. Henry returns to Georgia and is plunged into battle. अब वो गॉर्जिया में जाके फिर से क्या हो जाता है? वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है. The Austrian and German armies have broken through the Italian lines. Now Austrian and German armies कहाँ आ चुकी हैं? Italian lines पर आ चुकी है and a massive retreat from the front begins. और उन्हें पीछे हटना पड़ता है. Since the main road is blocked with so many vehicles, Henry and his ambulance driver try to cut across the countryside. अब यहाँ पे जो रोड है बीच में, जब वो रिट्रीट कर रहे होते हैं तो बीच में रोड क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है. तो कंट्री साइड से, विलेज साइड से निकलने की कोशिश करते हैं. They become stuck in mud and two sergeants they have picked up try to flee rather than help. यहाँ पे जो दो सार्जेंट उनके साथ में होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, वो उनकी मदद नहीं करते हैं. हेनरी शूट्स एट देम हिटिंग वन और हेनरी एक को उनमें से शूट कर देता है. अनदर एम्बुलेंस ड्राइवर बोनेलो एग्जीक्यूट्स द सार्जेंट विद अ बुलेट टू द हेड. और सार्जेंट को क्या कर देता है? वहीं पर बोनेलो जो उसके साथ में सेकंड ड्राइवर था जो कि मैंने कैरेक्टर में आपको बताया था, वो उसे क्या करता है? एग्जीक्यूट कर देता है. When they reach the Tagliamento River, अब वो Tagliamento River पे पहुंचते हैं, there is a cordon of Italian military police who, out of paranoia and misguided patriotism, are shooting their own officers for having retreated. अब यहाँ पे क्या है? जो इटालियन मिलिट्री पुलिस है वो अपनी ही आर्मी के लोगों को क्या कर रही होती है? शूट कर रही होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने रिट्रीट करके पीछे मुड़कर सही नहीं किया. पेट्रियटिज्म, मिसगाइडेड पेट्रियटिज्म की वजह से वो अपनी आर्मी को शूट कर रहे होते हैं. हेनरी एस्केप्स बाय डाइविंग इनटू रिवर. यहाँ पे हेनरी जो है वो रिवर में छलांग लगा के चला जाता है, डाइव करके वहां पर अपने आप को सेव कर लेता है. ही मेक्स हिज वे टू मिलान और मिलान की तरफ को वो आता है. हैविंग डिसाइडेड दैट ही विल नो लॉन्गर फाइट फॉर इटालियन आर्मी और पर्टिकुलरली इन द वॉर. अब वो डिसाइड कर लेता है कि अब उसने इटालियन आर्मी के साथ नहीं देना है. Henry learns that Catherine is in the Italian town of Stresa, a resort town near the Swiss border. हेनरी को पता चलता है कि जो कैथरीन है वो कहाँ पे है? इटालियन टाउन स्ट्रेसा में है, स्विस बॉर्डर पे. ही गोज देयर एंड ही एंड कैथरीन रियूनाइट. यहाँ पे क्या होता है? वो और कैथरीन दोनों मिल जाते हैं. Soon Henry learns from a friendly bartender
that the military police are coming to arrest him for desertion. यहाँ पे मिलिट्री पुलिस उसको ढूंढने आती है, और इस बात को उसे कौन बताता है? एक जो उसका फ्रेंडली बारटेंडर है। तो कई बार क्वेश्चन बीच में पूछ लिया जाता है कि इन्फॉर्म कौन करता है, हेनरी को इन्फॉर्म कौन करता है? तो उसका जो एक बारटेंडर, फ्रेंडली बारटेंडर है, वो बता देता है कि तुम्हारा जो डिसर्शन, डिसर्शन का मतलब होता है किसी आर्मी को छोड़ देना। ओके, आर्मी की जॉब को छोड़कर वहां से भाग निकलने को डिसर्शन यूज किया जाता है। He and Catherine escapes from Lake Maggiore to Switzerland. अब वो दोनों के दोनों, कैथरीन और हेनरी, दोनों के दोनों कहाँ चले जाते हैं? They both go went to Switzerland, where they successfully pass for tourists and receive visas to stay. In Switzerland, Henry and Catherine live outside the quiet sky down of Montreux, waiting for Catherine's baby to arrive and utterly content with each other's company. They both are happy and they are waiting for their baby. अब दोनों वेट करते हैं अपने बेटे के लिए, जो वहां पर अभी होने वाला है। एंड they go on holiday to the nearby town of Lawson, to the closer to the hospital. अब वो हॉस्पिटल तक चले जाते हैं। When Catherine's contractions begin, Henry takes to her to the hospital. यहाँ पे जब कैथरीन को वो लेकर कहाँ चला जाता है? हॉस्पिटल लेके चला जाता है। As the day progresses, it is clear that Catherine's labor is becoming increasingly complicated and dangerous. तो जो कैथरीन का लेबर है, लेबर पेन है, वो बहुत ज़्यादा होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और खुद कैथरीन के लिए वो डेंजरस हो जाता है। द डॉक्टर्स ट्राई टू गिव हर अ सिजेरियन ऑपरेशन। जो डॉक्टर्स है वो सिजेरियन की कोशिश करते हैं, बट द बेबी इज स्टिल बॉर्न एंड कैथरीन इवेंचुअली डाइज ऑफ मल्टीपल हैमरेज। जो कैथरीन है उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, और जो बेबी है he is stillborn. Henry, now alone, walks back to the hotel in the rain, or with the sad note, you know, the novel ends. He's walking back to hotel. वो फिर से अपने होटल की तरफ वापस आता है, and it's raining. So with this, the story ends. Now let's come to the theme of the novel. As we know, the theme of the novel is war. It is about First World War, and he worked there. And if we talk about sense of loss, disillusionment that many people felt in its aftermath, loss and disillusionment, as we just read this one, many of the characters in the novel are grappling with sense of loss and disillusionment. बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है वॉर के टाइम में, तो लॉस और डिsillusionment इसका थीम था। Identity and self-discovery. Frederick Henry undergoes significant transformation over the course of the novel as he grapples with his own identity and sense of self in midst of war and love. यहाँ पर वो सेल्फ डिस्कवरी भी जो कैरेक्टर्स हैं वो करते हैं। Masculinity. Hemingway portrays the Frederick Henry and the other male characters in the novel reflects his own ideas about masculinity and what it means to be a man. तो यहाँ पे masculinity भी शो की गई है। The novel explores theme of courage, stoicism, and the idea of the code hero that are often associated with Hemingway works. Hemingway के बहुत सारे works में ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। Now let's go through the 20 MCQs on a farewell to arms with explanation. Here is the first question for you. Who is the author of Farewell to Arms? Easy question. Ernest Hemingway. In which war a farewell to arms is set? So it is World War First, as you can see. What is the protagonist name in a farewell to arms? इसमें जो protagonist है वो कौन है? आप लोगों का आंसर है फ्रेडरिक हेनरी। Next is where does Frederick meet Catherine in a farewell to arms? जो फ्रेडरिक है वो कैथरीन से कहाँ पे मिलता है? So it was Milan. Frederick meets Catherine in Milan, where he is stationed as an ambulance driver. What is Catherine's profession in Farewell to Arms? Catherine का जो profession है वो क्या है? So she is a nurse. हम लोगों ने देखा कि वो क्या है, एक nurse है। Who is Rinaldi in Farewell to Arms? वो कौन है? Rinaldi जो character है वो कौन है? वो है Frederick's best friend and fellow ambulance driver.
हु इज द प्रीस्ट इन फेयरवेल टू आर्म्स? इसमें जो प्रीस्ट है वो कौन है? कैथोलिक प्रीस्ट हु मिनिस्टर्स टू द सोल्जर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज what is Frederick's nationality in a farewell to arms? इसमें जो nationality है वो कौन सी है? So he is an American but he is fighting for Italian. What is the name of the hospital where Catherine works in a farewell to arms? इसमें जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? सेंट एंथनीज हॉस्पिटल. Let's come to the next question. The next question is where does Frederick go after he deserts the army in farewell to arms? वो कहाँ चला जाता है? So it is A, Switzerland. First he went to Milan, but later he went to Switzerland. What happens to Catherine and Frederick's baby in farewell to arms? The baby is stillborn. What is the significance of the title of farewell to arms? इसका significance क्या है? So it is B. It symbolizes the loss of innocence. Next question for you. What is the name of the battle where Frederick is injured in a farewell to arms? Answer is C. The Battle of Caporetto. Who shoots Fredericks in a farewell to arms? यहाँ पे फ्रेडरिक को कौन शूट करता है? A friendly soldier. Next question for you. What is the ending of Farewell to Arms? B is the answer. Catherine dies during childbirth. What is the role of alcohol in a farewell to arms? B is the answer. It is used to cope up with the trauma of war. So alcohol is used for with trauma of war. The to cope up with the trauma of war. Next question. What is the theme of love in a farewell to arms? B is the answer. Love is fleeting and fragile in this. What is the theme of masculinity in A Farewell to Arms? D is the answer. Masculinity is complex construct that can be both positive and negative. 19. Question 19. What is the role of religion in A Farewell of Arms? It is portrayed as complex force that can provide both comfort and conflict. What is the significance of rain in A Farewell to Arms? Uh, It symbolizes the destruction and chaos of the war. So with this, we end this session. Hopefully you enjoyed this session and you learned a lot from this. If you like the work, you can just hit like button and subscribe the channel and share this with others. So see you soon in next video. Till then, goodbye. Take care.